अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 4.3.3 विच इज डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें हमने स्टार्ट किया है हमारा टॉपिक 4.3 विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एंड सो फार वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ ionic bond, and we did it with the help of example of sodium chloride in detail. Then we started our topic covalent bond. We did discussion on covalent bond. Then we discussed types of covalent bonds, which were single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. Now in this lecture we are going to start topic 4.3.3, which is third type of chemical bond, and its name is dative covalent bond or coordinate covalent bond. These both terms are used for this type of bond, but the most common term is coordinate covalent bond. लेकिन आपको dative covalent bond का भी पता होना चाहिए। अगर हम देखें इसकी definition की तरफ, so coordinate covalent bond or dative covalent bond is a type of covalent bonding in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only. यानी कि जो दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं उनमें जो पेयर शेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो एक ही एटम की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग का वर्ड इसमें नहीं आएगा। अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो तो हम उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और अगर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम ओनली तो हम उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ एक बात तो जाहिर है कि जो शेयरिंग होनी है वो किसी भी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती और किसी भी ऐसे एटम की नहीं हो सकती जिसके पास सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डेड हों। सो इसके लिए सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं जिनके पास आफ्टर बॉन्डिंग भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच जाएं जिन्हें वो किसी को डोनेट कर सके। जी हाँ, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग बट आर अवेलेबल इन द वैलेंस शेल, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो किसी को डोनेट करके किसी की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता है। अब इसमें द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, इट इज कॉल्ड एज डोनर। इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। एंड द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर। और इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी एट द एंड, जो कंपाउंड हमें एंड पे मिलेगा एज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दैट वुड बी कॉल्ड एज एडक्ट। एडक्ट मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कोवेलेंट बॉन्ड की तरह नहीं हो सकती, एज वी नो दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसके लिए एक लाइन लगेगी, डबल होगा तो यू विल जस्ट डबल दैट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन्स बिटवीन द एटम्स। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यू विल ड्रॉ थ्री स्ट्रेट लाइन्स। बट फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स इट्स रिप्रेजेंटेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट. Basically, we use a small arrow like this to indicate the atoms and the pair of electrons being donated. यानी कि हम एक छोटे से एरो की मदद से ये शो कर देंगे कि किस एटम से इलेक्ट्रॉन्स किस एटम को डोनेट किए जा रहे हैं। और वो कैसे पता चलेगा? The head of the arrow is always towards the acceptor atom. यानी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम द अदर एटम, एरो का हेड हमेशा उसकी तरफ ही जाएगा। जैसे कि अगर आप मिसाल लें इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसे हम अभी इसकी फॉर्मेशन को आगे डिस्कस भी करने वाले हैं, यू कैन सी अ स्मॉल एरो विच इज ड्रॉन फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन टूवर्ड्स द हाइड्रोजन आयन. You can see that the head of the arrow is towards hydrogen ion, which is also called as proton. और इसकी जो arrow की tail है, it is
kind of attaching to the lone pair. As you can see around the nitrogen, there are 2 electrons which are not involved in bonding at all. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलती, बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं इसकी, इसीलिए मेक श्योर द एग्जाम्पल्स रिटन इन योर बुक यू जस्ट लर्न देम बाय योर हार्ट एंड यू मस्ट नो हाउ दे आर फॉर्म्ड. तो उन्हीं एग्जाम्पल की डिस्कशन और उनकी फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए चलते हैं हम अपने लाइट बोर्ड की तरफ. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. और सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल. As we know that radical is collection of atoms ammonium radical, and if we look at its formula it would be NH4 and there is going to be plus sign over it because radical का मतलब ही होता है charged particle है but charge on a molecule. इसको molecular ion भी कह सकते हैं. So, इसका मतलब ये कोई 2 चीज़ों से मिलके बनेगा जिसमें एक तो अमोनिया होगी and the formula for ammonia is NH3. Ammonia is a gas and its formula is NH3. This is a stable structure having no charge on it. लेकिन अगर हम इसके लिए Lewis structure draw करें, so it would be something like this, that we know that nitrogen is having 5 electrons in its outermost shell like this, and 3 of them are attached with hydrogen. So ये हुआ हमारा structure अमोनिया का which is NH3. Now you can see that in this structure these two electrons they are lone pair. मतलब lone pair, they are not involved in any kind of bonding. यानी कि हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ है तो स्टेबल मगर वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके किसी और एटम की स्टेबिलिटी को अचीव कराया जा सकता है. सो सपोज इफ दिस अमोनिया is going to combine with hydrogen ion H+. It is a cation hydrogen ion. It is formed when its outermost electron, which is the only one electron, it is loosed by the hydrogen atom. So it would be turned into hydrogen ion. Now this hydrogen ion is having no electron at all. It is having only 1 proton in the nucleus and no electron in the outermost shell. So it means that this hydrogen needs 2 electrons. If you look at this thing, these 2 electrons can fulfill the requirement of hydrogen. So this is going to happen. This pair is going to be shared by ammonia towards hydrogen. और ये help करेगा in the formation of ammonium radical. So structure would be something like this. Now, these 2 electrons you will show by one arrow sign and we will show hydrogen. But look, I have not shown this plus sign over here because now this plus belongs to this whole thing over here. So हम कहेंगे this is ammonium ion which is formed by coordinate covalent bond between ammonia and hydrogen ion, and this hydrogen ion is also called as proton because it is having only 1 proton in its nucleus. So हम देख लेते हैं कि हमारे इस स्ट्रक्चर में डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन. So this ammonia is donor, this hydrogen is acceptor, and if we look at this thing, so this is adduct. जो 2 चीज़ों के मिलने से बनेगा, सो इसे हम कहेंगे एडक्ट.
सो ये तो हुई फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल। अब चलते हैं एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ, विच इज formation of coordinate covalent bond between ammonia and boron trifluoride. So, here you can see that we are going to discuss coordinate covalent bond between these two things. One is ammonia, its formula is NH3, and one is boron trifluoride and its formula is BF3. Tri stands for 3, B is for boron and F is the symbol for fluorine. अब आखिर इनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? सो अभी इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं. We know that structure of ammonia, it is N combined with hydrogens like this, and this is having one lone pair involved. So this is again electron rich compound. And let's have a look at boron trifluoride. Boron is basically having 3 electrons in its outermost shell. Atomic number for boron is 5, so 2 electrons in the first shell and 3 electrons in the next shell. So 3 electrons in the outermost shell. So if it is going to form boron trifluoride, so it means that one of the electron is forming covalent bond with fluorine like this. But as you can see, if you look at boron, it is electron deficit. How? Let's count the electrons in the outermost shell of the boron now after making covalent bond with 3 fluorine atoms. So here are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यानी कि अभी भी बोरॉन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन हम जानते हैं कि बोरॉन को स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं. So 8 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है. And we can see that this nitrogen is having one lone pair. So what is going to happen? This nitrogen is going to donate this lone pair. And again, this ammonia is going to become donor, and here boron trifluoride is our acceptor. And in the result, we are going to get our adduct. So देखते हैं कि इसमें adduct कैसे बनेगा. N H, and here you will just show one arrow towards boron. So this compound is NH3BF3. मगर this arrow is indicating that coordinate covalent bond exists between these two species. और हमेशा the direction of arrow would be representing you कि किस चीज से डोनर पेयर किस चीज की तरफ मूव कर रहा है. सो अगर आप पेपर में ये एरो गलत लगाएंगे तो सारे का सारा ही गलत कंसीडर होगा. सो ये हैं दो बहुत ही बेसिक और कॉमन एग्जाम्पल्स फॉर formation of coordinate covalent bond in which the pair is donated by one atom or one molecule. So students, आज के इस लेक्चर में हमने सीखा coordinate covalent bond और साथ ही साथ कुछ definitions इससे related like donor, acceptor, what is lone pair of electrons. अब मुझे उम्मीद है कि आपको examples की मदद से अच्छे से समझ आया होगा. So see you in next lecture. Until then, Allah Hafiz.